जैसे मैंने बोला था इस चैप्टर में दो पार्ट्स है, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो नाम सॉल्यूशंस ही है, लेकिन इसमें दूसरा पार्ट जो है वी कम टू इट नाउ, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये समझने के लिए आई जस्ट डिस्कस विद द एग्जांपल सो दैट इट इज क्लियरली अंडरस्टूड। ओके, let's consider three of the substances. One is NaCl, other is glucose, and the third one is benzoic acid. Benzoic acid. Up, when NaCl is dissolved in water, what happens to it? So NaOH and sorry. NaOH plus HCl? That is not correct. No, sir. Sir, just dissolves in salt water. So after it dissolves, what is the species formed in the solution? Na plus and Cl minus. So वही पूछा मैंने, NaCl dissolved in water will exist into the ions, that is Na plus and Cl minus. मतलब one NaCl now is dissociated into two ions. So this substance which breaks down into its ions is called an electrolyte which undergoes what? Dissociation. Now coming to next, glucose. What is formula of glucose? C6H12O6. C6H12O6. अब ग्लूकोज को अगर वाटर में डिसॉल्व करो, do we get the ions of carbon, hydrogen, oxygen? No, sir. It doesn't give any ions. Now the reason over here, NaCl में bond कैसा है? So ionic bond. Ionic bond. तो पानी में जाकर ions बनेंगे. Glucose is a purely covalent compound. और कोवलेंट कंपाउंड डिसोसिएट करके आयंस नहीं देते हैं. इसका मतलब on dissolution in water, if I have one molecule of glucose, how many will exist in the solution now if it doesn't dissociate? अगर डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो एक ग्लूकोज पानी में जाकर वैसे ही एग्जिस्ट करेगा या कुछ और वे में एग्जिस्ट करेगा? नहीं समझा? कोई कोवलेंट कंपाउंड अगर ब्रेक डाउन नहीं होता है तो जितने मॉलिक्यूल्स उसके वाटर में जाने से पहले थे, वाटर में जाने के बाद same. It'll just become सेम ही aqueous. रहेगा. That's what I'm asking कि one molecule of glucose after dissolved in water will exist as how many molecules? So one. तो एक ही है. अब ये क्यों बता रहा हूं, इसी के पीछे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट है. तो ऐसा सब्सटेंसेस जो ब्रेक डाउन नहीं करता है, दे आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट. दे आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो टूटते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो नहीं टूटते हैं. सिंपल फ्रॉम द नेम. अब कमिंग टू द थर्ड वन, benzoic acid as a carboxylic acid, when it is dissolved in benzene, it is observed that the benzoic acid C6H5, C double bond O and OH associates with another molecule of benzoic acid C6H5, C double bond O and OH. Now associate का मतलब क्या? डिसो का मतलब टूटना, तो असो का मतलब So it forms another, like a new compound. It forms a new species, a new compound. तो क्यों ये associate होता है, जुड़ता है? जोड़ना मतलब association. Because the carbon and oxygen have a polarity because of the difference in electronegativity.
even the OH has a polarity due to difference in electronegativity. सेम चीज मैंने यहाँ पर भी बताया, देखो कार्बोनाइल और OH के बीच में क्या हो रहा था, क्या हो रहा है, डाइपोल भाई डाइपोल नहीं नहीं, कार्बोनाइल और OH के बीच में क्या हो एज रहा बॉन्डिंग है, एज H बॉन्डिंग bonding. H बॉन्डिंग। यहाँ पर भी ये कार्बोनाइल है, ये OH है, क्या होगा, सेम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्पीक द वर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली यहाँ पर H पे डेल्टा प्लस है and this has a delta minus, so even this H will attract to O and will form H bonding. H bonding. So now two molecules of benzoic acid came together, and because of the H bonding it is existing as a single molecule. Yes or no? यस तो मेरे पास अगर दो बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स है तो बेंजीन में जाने के बाद इट विल एग्जिस्ट एज सो two डाइमर benzoic acid. It exists as a dimer, and it will exist as how many molecules now? सो वन मॉलिक्यूल One. Okay, it will exist as one species. तो ऐसा केस जहां पर डाइमर या ट्राइमर जैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन। क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। तो जब भी हम सब्सटेंसेस की बात करते हैं, when it is dissolved in a solvent to form a solution, now onwards you should always give a thought process that is the substance undergoing disso, asso, or it is neither undergoing disso or asso, मतलब it's a non electrolyte। ठीक है, अब इससे फर्क क्या पड़ता है, let's understand that। In case of dissociation, the number of particles which exist in the solution, number of particles which exist in the solution increases or decreases? इंक्रीजेस Increases। तो number of particles को आज के बाद will represent by n dash। डैश इसलिए बोलते हैं बिकॉज n is already related with moles, number of moles के लिए n होता है, तो particles के लिए n dash बोला। तो अगर मेरे पास 100 NaCl के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वाटर में जाने के बाद हाउ मेनी पार्टिकल्स विल बी एग्जिस्टिंग, सो 200 200। For every 1 NaCl we are getting 2 ions, for 100 NaCl I'll get 200 ions, they are the number of particles now present in the solution। तो उसको बोलते हैं n dash। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि n dash इंक्रीज हो गया। ठीक है, नाउ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नो सर no, so I will say n dash remains the same। और असो में अगर मैं 100 बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डालूं तो कितना स्पीशीज एग्जिस्ट करेगा, 50 50, क्योंकि दो दो की जोड़ी हो रही है, मतलब हर दो की जोड़ी एक में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर 100 पर्सन है तो एज अ कपल दे विल कन्वर्ट टू 50, बराबर, कपल यानी डाइमराइजेशन हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में एन डैश क्या होगा, डिक्रीज। समझा? Yes, sir. So now I will start with the concept of colligative properties। उसके लिए this part of discussion was very important। एक बार फिर से, the substances can either undergo a breakdown or a joining, that is dissociation or association। इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज जैसे कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमेशा नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, जिसमें एंडेश चेंज नहीं होता है। डिसो मतलब टूटना तो एंडेश बढ़ेगा, असो मतलब जुड़ना तो एंडेश घटेगा। दैट्स द कंक्लूजन। नाउ
Solutions में there are some of the important properties which get affected because of the number of particles. तो ऐसी प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, दे आर कॉल्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज. Once again, colligative properties are those properties of solution which are dependent on number of particles. n dash number of particles. तो अगर किसी सॉल्यूशन में पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन वुड बी हायर, घटेगा तो इट विल बी लोअर्ड, एंड सेम रहेगा तो इट विल हैव नो इफेक्ट. मतलब थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल सेम ही होगा. ठीक है, तो सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज. So first part में I will be discussing the colligative properties of non-electrolyte solutions, जिसमें n dash change So no effect. नहीं होगा, मतलब there will be no effect. अब let's start with these type of properties one by one. The first property coming up is relative lowering of vapor pressure. This is the name of the colligative property of solution which is dependent on n dash. अब कैसे वो डिपेंड करता है, हम लोग इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे. Let's start understanding this. Now I have already discussed about the vapor pressure. एक बार फिर से इसको definition देख लेते हैं. Josefa, can you tell the definition? Vapor is the pressure exerted by the liquid when it is at equilibrium in the liquid gaseous phase. Pressure exerted by whom? By the vapors. Vapors of the liquid, not liquid. Yeah. Pressure exerted by the vapors of the liquid in the state of equilibrium when the rate of liquid becoming gas and gas becoming liquid is the same at constant temperature. Perfect. That is, rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation, liquid to gas, and gas condensing back to liquid becomes same at a constant temperature. So ऐसे state में जो pressure exert करता है vapors, that is called vapor pressure. ठीक है. Now let's consider a beaker in which I have a solvent which is volatile. What is volatile solvent? So evaporates easily. Evaporates easily. मतलब it can form the vapors quite easily. तो जितने ज्यादा vapors बनेंगे उतना ही vapor pressure so it'll increase that much. It will increase. मतलब जितना solvent volatile होगा, जितने ज्यादा vapors बनेंगे उतना ही उसका vapor pressure ज्यादा होगा. ठीक है, तो vapor pressure depends on the volatility of the liquid. More the volatility, more will be the vapors and higher will be the vapor pressure. Simple as that. ठीक है. अब इस solution में I add a non-volatile solute. क्या करने जा रहा हूं, इस प्योर सॉल्वेंट में जब तक इसके साथ कुछ एडेड नहीं था, ये सॉल्वेंट कैसा है, प्योर है. ठीक है. नाउ मैं इसमें एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट यानी नमक को ऐड कर देता हूं. ठीक है. अब जैसे ही मैंने नमक को ऐड कर दिया, इट इज नाउ कन्वर्टेड टू अ the solvent has now become a impure, and when a solute is added to solvent it becomes a solution. impure solvent मतलब solute डालने के बाद अब इसको मैं क्या बोलूंगा, solution. अब ये solution में apart from the pure solvent I will also have the impurities of the particles of NaCl.
So these particles now will occupy some space in the solvent. Do you all agree? Yes. Now ये वाले जो particles है ना, ये तो vaporize नहीं होते हैं because the solute which I have added is a non volatile solute which doesn't contribute to the vapor pressure. तो यहाँ पर वेपर प्रेशर में सिर्फ सॉल्वेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो अब सॉल्ट डालने की वजह से कैन आई से द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्ट नाउ विल ब्लॉक सम ऑफ द स्पेसेस ऑफ द सॉल्वेंट. Yes, sir. कुछ तो स्पेसेस वो लेगा ना. पहले प्योर अकेला था, राजा था. अब उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो कुछ तो स्पेसेस ऑक्यूपाई करेगा. अब वो तो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है. तो बिकॉज ऑफ दैट अब जो वेपर्स यहां से इवेपोरेट होंगे सॉल्वेंट के, इफ आई आस्क यू एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट का वेपर्स इन द इनिशियल स्टेज व्हेन NaCl was not added, what will happen to the vapors over here? Should Will it decrease, like, increase or decrease? Huh? should decrease because of the NaCl. Because of the space occupied by the non-volatile solute particles. Correct. तो मान लो प्योर सॉल्वेंट के पहले 100 वेपर्स निकल रहे थे, अब कुछ स्पेसेस ब्लॉक हो गए, उसकी वजह से आई कैन से देयर विल बी अबाउट 85 वेपर्स व्हिच वुड बी रिलीज्ड. ओवरऑल व्हाट इज द इफेक्ट बिकॉज ऑफ लेस वेपर्स? So lowering of vapor pressure. द वेपर प्रेशर हैज लोअर्ड. सो ये हो गया आपका नेक्स्ट पार्ट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है. अब इसको देखो स्टेटमेंट में कैसे फॉर्म करेंगे. कब ये लोअर हुआ? व्हेन अ So what is added? non-volatile solute. Perfect. When a non-volatile solute is added to To a volatile pure solvent. a volatile pure solvent. See once again, एक non-volatile solute को जब हमने add किया to a pure volatile solvent, the vapor pressure was lowered. This phenomena is called lowering of vapor pressure. Understood? Yeah, sir. ठीक है. अब कुछ पैरामीटर्स हम देखते हैं. प्योर सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ दिस प्योर सॉल्वेंट इज इंडिकेटेड बाय P1 नॉट. P मतलब वेपर प्रेशर, 1 was the number given to सॉल्यूशन में हमने कुछ नोटेशंस यूज किए थे. नंबर 1 was given to the solvent. नंबर 2 जहां पर भी मैं लिखूंगा that will always indicate the hello Yeah, sir. solute. एंड सोल्यूशन को हम SOL से इंडिकेट करेंगे. These are the notations you should never ever forget. So if I write P1 naught, it means vapor pressure of pure solvent. ठीक है. जो आप बोल रहे हो उसी को आपने शॉर्ट में नोटेशन दे दिया, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट. सो दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. एंड सोल्यूशन के लिए आई विल इंडिकेट P sol या PS. तो 1 2 sol या S ये सॉल्वेंट सोल्यूट और सोल्यूशन के लिए इंडिकेट कर रहे हैं. ठीक है. सो नाउ when a non-volatile solute is added to a pure volatile solvent, the vapor pressure, किसका vapor pressure lower हुआ? Let me just write this. Vapor pressure of what is lowered? So P1. P1. मतलब what will I say? The vapor pressure of
किसका वेपर प्रेशर कम हुआ, सॉल्वेंट का या सोल्यूशन का? Solution. सोल्यूशन। द वेपर प्रेशर, बिकॉज सोल्यूट ऐड होने के बाद सॉल्वेंट क्या बन चुका है, सोल्यूशन, राइट? So therefore, if I now ask you to compare P1 naught versus PS, which is greater and which is smaller? So PS is smaller. PS is smaller, yani P1 naught is greater. And therefore, lowering kitna hua, that is measured as delta P. And what will be this change equal to? What minus what? So P1 naught minus PS. Obviously, bada minus chota. So lowering of vapor pressure now mathematically is simply indicated as P1 naught minus PS. Understood? Yeah, sir. अब कमिंग टू द थर्ड वर्ड, पहला वर्ड वेपर प्रेशर समझाया, सेकेंड लोअरिंग क्यों होता है, एंड थर्ड रिलेटिव का मतलब। रिलेटिव मींस विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। तो यहां पर इनिशियली हमारे पास क्या था, सोल्यूशन बनने के पहले प्योर सॉल्वेंट। सो दिस लोअरिंग इज ऑलवेज मेजर्ड with respect to, relative to P1 naught. So when you divide the lowering by P1 naught, this delta P by P1 naught becomes lowering of vapor pressure with respect to P1 naught, यानी इसको हम बोलते हैं relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. समझा? तीन चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट थी, P1 naught versus PS. P1 naught is greater. Difference is called lowering. Divide by P1 naught is relative lowering. समझा? Yeah, sir. Once again एक बार वापस आपके लिए लिख रहा हूं, डेल्टा P अपॉन P1 naught which is equal to P1 naught minus PS upon P1 naught is called relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. अब we will try to prove why it is a colligative property. ये प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सल्यूट, यानी सल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर क्यों डिपेंडेंट है, दैट वी आर गोइंग टू प्रूव। सो पे अटेंशन। सबसे पहले, दिस सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन इज सल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट, राइट? कोई भी सॉल्यूशन अगर बाइनरी है तो इट विल ऑलवेज बी मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, राइट? So tell me, for two component binary solution, what is PS equal to? So P naught X1, P naught P1 naught X1 plus P2 naught X2. Perfect. First of all, it is equal to sum of the partial vapor pressure. Then Raoult's law लगाओ तो P1 naught X1 plus P2 naught X2. अब हमने यहाँ पर कंडीशन लिया है कि सल्यूट कैसा है, कैसा है, मस्त है, कैसा है सल्यूट? So could you repeat that? सल्यूट कैसा है? What type of solute we have taken? Pure. Non-volatile. 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 So will it contribute to the vapor pressure? No, it won't. It won't. And solvent कैसा लिया है? So solvent will be the only thing that contributes to the vapor pressure. Exactly. So can I say for a non-volatile solute, what is going to become equal to 0 as it is not contributing So to the vapor pressure? P2 X2 will become 0. Yes, P2 naught will become equal to 0. That is P2 जो है that would be equal to 0 ना, because solution का vapor pressure सिर्फ 1 की वजह से, 2 की वजह से तो है ही नहीं,
So if the solute is non-volatile, I can directly cancel off this term because it doesn't contribute to the vapor pressure. Therefore, the solution ka vapor pressure is now just equal to P1 naught X1. Do you all agree? Yeah, sir. And therefore, delta P, which was equal to P1 naught minus PS, I can now substitute PS as P1 naught X1, everyone. Taking P1 naught common, what is 1 minus X1? X2. X2, very good. So it is P1 naught into X2. And what is X2? So mole fraction, mole fraction of the Of solute. solute. And now I divide by P1 naught. So delta P by P1 naught becomes equal to what? So X2. Just X2. And X2, as we said, is mole fraction. Kiska? Of Of the solute. solute. मतलब ये जो ratio है, that is dependent only on the solute ka proportion in the solution. Is it any way dependent on solvent particles or solvent molecules? देखो आपके solution में दो components है, एक solute का, दूसरा solvent का. अब अगर हम बोल रहे हैं कि delta P by P1 naught is equal to X2, it means that only the particles of the solute are contributing to this ratio. मतलब can I say only the particles of the solute are actually determining this property? So I mean, yeah, so it's intuitive because so because of them only we are getting a lower pressure. So हाँ, तो that's exactly what we have proved now mathematically. Conceptually तो हमने समझा कि particles जो है वो कुछ spaces occupy करेगा and due to that the vapor pressure will be lowered. So the vapor pressure का lowering is dependent on what? इसकी वजह से हुआ है ना, ये red dots की वजह से. And what are these red dots? They are the particles of the solute. So the properties which are dependent only on the particles of the solute and not on any other factor are called colligative properties. That's what we mean by colligative property. Samjha? Yes or no? Yes. Everyone? yeah, sir. Okay. So delta P by P1 naught is equal to X2. What is X2 in turn? So N2 upon N. 1 plus N2. Perfect. It's the moles of that component upon the total moles. Fraction का मतलब उस component का moles upon total moles. So N2 upon N1 plus N2. ठीक है. अब एक कंडीशन लेते हैं. If the solute moles is very small as compared to the solvent. Normally जब भी solution हम बनाते हैं तो किसका proportion measure होता है? So major will be solvent. Always, right? Most of the scenarios जब हम बोलते हैं एक solution बनाया गया है तो we add a small amount of solute to a large amount of solvent. Correct? बोलो. Yeah, sir. Yeah. That's what I've written कि solute का जो moles है because of the smaller amount it's very small as compared to solvent, then can I say N2 is much smaller as compared to N1? So you can remove it from the denominator. Correct. So N1 plus N2 approximately would become equal to what? So N1. N1.
तो अब इस कंडीशन के बेसिस पे डेल्टा पी बाय P1 नॉट विच वॉज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 can be approximately taken as N2 by N1. Now, what is number of moles calculated as? So given mass upon molar mass. Yeah. Given mass upon molar mass, W upon M, given mass upon molar mass. So this N2 could be in turn written as W2 by M2, यानी weight of the solute upon molar mass of solute, and N1 जो नीचे है that could be written as W1 by M1, weight of the solvent upon molar mass of the solvent, बराबर. Yeah, sir. So now finally अगर यहाँ से if I am interested in getting M2, why it is important I'll just discuss. M2 उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? W2 by W1 into M1 upon delta P into P1 naught. I've just taken everything on one side and made a formula for M2. ठीक है? M2 is W2 by W1 into M1. ये नीचे जाएगा और P1 naught ऊपर आएगा. So this is the formula to calculate the molecular mass of the solute. Okay. Yeah, sir. So but why is it important? हाँ. Now why it is important? I'll discuss that. यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है उसको लोअर करना है. मान लो देयर इज अ रिक्वायरमेंट, एक्सपेरिमेंटल रिक्वायरमेंट टू लोअर द प्रेशर बाय x बार और x एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो अब कौन सा पार्टिकल आप यूज करोगे जो उतना लोअरिंग आपको देगा, वो फाइंड करना है. तो द सल्यूट विच विल बी टेकन विल बी डिटरमाइंड बाय द मोलर मास. मतलब if I know the molar mass of the required solute is 58.5, I can select NaCl and achieve the required vapor pressure lowering. अगर मेरा जो molecular mass है वो 180 मिला तो I can take it to be glucose, क्योंकि ग्लूकोज का molar mass 180 है. मतलब जो सब्सटेंस को हम डिसॉल्व करके वेपर प्रेशर लोअरिंग कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट फॉर द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वी विल यूज दैट पर्टिकुलर सल्यूट. तो कौन सा सल्यूट यूज करना है, दैट वुड बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द M2 कैलकुलेशन. सो मान लो आपने 5 ग्राम ऑफ सल्यूट लिया इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट विच इज वाटर, तो मोलर मास M1 जो है वो आपका 18 हो जाएगा. अंडरस्टैंड, आई एम गिविंग एन एग्जांपल. 5 ग्राम कोई तो अननोन सल्यूट है, अननोन ना. 5 ग्राम सल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन टू अचीव द लोअरिंग बाय 0.5 एटमॉस्फेयर, एंड जो P1 नॉट है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, है ना. तो ऐसा कौन सा सल्यूट यूज करूंगा वाटर में डिसॉल्व करने के लिए टू गेट दिस लोअरिंग. सो व्हेन आई डू द कैलकुलेशन आई विल गेट द M2 का वैल्यू. Yeah, यस sir. और नो? So but this equation we derived on the assumption that N2 is very less, right, compared to N1. So but over here it's not that negligible also, right? See, 5 gram in 100 gram, matlab solute is 5 gram and solvent is 95 grams. So 5 as compared to 95, can't you neglect it? And this is the weight. हमने moles को compare किया है. मतलब moles क्या होगा? 5 upon the molar mass and 100 upon the molar mass, right? Okay, so yeah, got it. So M2 will be very high. Yeah. Yes, M2 is going to be very high. नॉर्मली जो सल्यूट्स हम यूज करते हैं ना लोअरिंग के लिए या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अचीव करने के लिए, दे हैव अ हाई मोलर मास, और जितना मोलर मास ज्यादा रहता है उतना एक्यूरेसी उसका ज्यादा रहता है. हायर द मोलर मास मोर इज द एक्यूरेसी. क्लियर? समझा?
Yeah, sir. Yeah. Got it. Okay. So now this was the first colligative property which was named as relative lowering of vapor pressure. पहला चीज नाम से, vapor pressure is the pressure exerted by the vapors of a liquid in the state of equilibrium at a constant temperature. जब उसमें नॉन वोलेटाइल सल्यूट की एंट्री होती है, उसके पार्टिकल्स सॉल्वेंट को थोड़ा ब्लॉक कर देंगे, ड्यू टू विच द वेपर्स ऑफ द प्योर सॉल्वेंट नाउ in the solution will be decreased and the vapor pressure of the solution will be less. This property is called lowering of vapor pressure. Mathematically, P1 naught becomes greater than PS or PS becomes smaller. And the difference of that is called lowering. Divided by P1 naught is called relative lowering. Then I applied the Raoult's law and I put a condition for the solute which was non-volatile and doesn't contributing to the vapor pressure. P2 naught is 0, this term gets lost. And now PS is only due to P1 which is equal to P1 naught x1. So substitute kar diya, finally we got x2. Yahan se we can say that this particular ratio is dependent on the solute ka fraction only. मतलब जितने particles solute के होंगे that would determine or thrive this property or change this property. Then x2 को हमने formula के basis पे रखा n2 upon n1 plus n2. Then I took an assumption for a solution जिसमें moles of solute बहुत छोटे होंगे as compared to solvent. I can ignore n1 plus n2. I can ignore n2, meaning n1 plus n2 will be approx become equal to n1. And then I took out a formula for m2 जिससे अगर आपको एक particular solute के through you want to achieve a lowering by some pressure in atmosphere given the pure solvent ka vapor pressure, then that solute could be selected to achieve the lowering which is required. Understood? Yeah, sir. अब देखो ग्राफ से ये बहुत सिंपल वे में समझेगा. So there is a graphical relation between the vapor pressure and temperature. First of all, tell me, how is vapor pressure related with temperature? टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर का प्रेशर Increase, right? Because there'll be more vapors at that लॉजिकल ना, temperature. because if you heat a liquid it will give more and more vapors, more the vapors more will be the vapor pressure. यानी वेपर प्रेशर टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. And it is observed that it is exponentially increasing. As the temperature increases, the vapor pressure also increases. Okay, so now let's say this is the graph for the vapor pressure of the solvent. अब इस solvent में I add a non-volatile solute. So when I add a non-volatile solute to it, what happened to the vapor pressure? So decrease. It decreased. मतलब I will get a similar graph, but that will be below the reference line. Yes or no? Yeah, sir. Yeah. ठीक है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सोल्यूशन से ज्यादा है. दैट वाज क्लियरली प्रूव्ड. This is my P1 naught and this is PS. And we know that P1 naught is greater than PS at any particular temperature. कोई भी temperature ले लो, P1 naught बड़ा है कि नहीं PS से? So, I just have a question, sir. Vp हाँ. is directly proportional to temperature. हम्म. Then why is the graph exponential? Shouldn't it be linear? See, when we say proportionality, मतलब ये y equal to mx वाला relation नहीं follow करता है. It follows a exponential relation. जैसे if you remember for the kinetics, AT was equal to A naught into e raised to minus KT.
मतलब AT with respect to time is directly related, but ये relation कैसा है? Exponential है, और negative sign indicate करता है कि it is exponentially decreasing. So when we say proportional, मतलब वो linearly increase कर रहा है या exponentially increase कर रहा है, वो उसके mathematical equation पे depend करेगा. I have not Okay, written sir. the Yeah. mathematical expression. I have just related the relation कि हाँ भाई increase करेगा, temperature बढ़ेगा, vapor pressure भी बढ़ेगा. लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया है कि when the temperature is increased, the vapor pressure का increase is much more when compared with the increase in the temperature. टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ा दोगे तो ज्यादा वेपर्स बनेगा, वेपर प्रेशर भी ज्यादा बढ़ेगा. दैट इज व्हाई इट इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग. Okay, got it. Yeah. समझा? सो दिस इज द ग्राफ फॉर द वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर. गॉट इट? Yeah, sir. Now let's do a numerical to understand this concept better. जैसे मैंने application बोला था उसी के related ये numerical भी है. Let's see. A solution is prepared by dissolving 394 gram of a non-volatile solute in 622 gram of water. So what is this 394 gram? So solute and W2. W2. I want the parameter. That's it. ये W2 है. In 622 gram of water, which is the pure solvent, meaning this is W1. W1. The vapor pressure of solution is found to be 30.74 mmHg at 30 degrees Celsius. So this So is what? PS. Very good. PS, because vapor pressure of solution hai ye. And if vapor pressure of water at 30 degrees Celsius is 31.8 mmHg. So P2, not X. No, only P2. P2. P2, not P1. X2. P2. P2 तो zero Oh, sorry, था ना. P1, P1, P1. P1. And this is not P1, this is P1 not. This is vapor pressure of what? Yes, sorry, Water partial ना. pressure of the solvent. क्या है? मतलब P1 नॉट होगा. ये प्योर वाटर का वेपर प्रेशर जब वो अकेला है, सल्यूट डिसॉल्व नहीं है, तब उसका 31.8 mmHg था. अब सल्यूट आने की वजह से उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? What will happen to the vapor pressure? Will it be raised or So lowered? decrease. Lower. So do you see the difference? 31.8 tha, now it has lowered to 30.74. Whatever we have done in the theory, that is what we see in the numerical. And अब question क्या है? We have to identify the molar mass So of this M2. unknown volatile solute. तो application यही है कि if I want a solution का vapor pressure to be lowered by this difference, then with the data given, what should be the molar mass, and based on that, what would be the solute to be selected? किसका molar mass उस solute से match करेगा? We will find out the solute over here. Clear? So can you just directly use the formula in this case? Yes, we will directly use the formula. So यहाँ पर generally we will take that assumption that N2 would be very small as compared to N1. ठीक है, तो वो assumption के basis पे, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है, because the M2 will be very high as compared to the M1 molar mass of the water. Water का तो molar mass 18 होता है ना, और जब यहाँ पर हम find out करेंगे M2 की value is going to be much higher. उस केस में आपका हमेशा N2 would be lesser than N1. That condition would be valid. Understood? Yes or no? Yes, sir. So you will write according to relative property. क्या था? Relative. Everyone. Lowering of Relative pressure. Vapor pressure. lowering of vapor pressure. Tell me the reduced formula. So M2 equals to W2 upon W1 into M1 into P naught upon delta P. Very good. If you remember the whole formula, it is best.
नहीं याद रखो तो ये बेसिक फॉर्मूला याद रखो, दैट डेल्टा P अपॉन P1 नॉट वाज इक्वल टू x2। ये मैं जस्ट आपके रेफरेंस के लिए वापस लिख रहा हूँ, ठीक है, वरना अगर डायरेक्ट याद है यू कैन राइट इट डायरेक्टली, नो इश्यूज। x2 was in turn n2 upon n1 plus n2, which was then approximated to n2 by n1. And then this n2 in turn was written as w2 by m2, and n1 was w1 by m1, right? So finally, the m2 is equal to w2 by w1 into m1 upon delta P into P1 naught. This is the direct formula for molar mass of solute according to the relative lowering of vapor pressure. ठीक है? Are you all getting this? Yeah, sir. Yes, sir. Everyone following? I'm not getting responses from all. अब देखो, the molar mass of the solute would be equal to, tell me the values to be substituted. I've already So put the notation for you. 394 into 18 in so into 31.8. So just add as 318. So then the so it becomes easier, I guess. Okay. So upon 622 into 3074, and then on top you can write into 10. Okay. So 31.8 upon 30.74 multiplied by 100 kiya hai, and we have taken that. So that decimal we have eradicated. Okay. Now it's a simple calculation of the terms. आप log से इसको calculate करोगे. Are you all comfortable with the logs? Everyone? So not very. No? चलो मैं एक बता देता हूँ वापस, चलो. So like This will be right equal to, now, हाँ. yeah. So like right now, yeah. Like so I don't mind solving it. So but then like when if it's a time test or something, then it's quite tough. So you have to solve it. जितना practice करोगे उतना your log would become faster. So मैंने क्या there बोला is था सबसे issue. पहले? हाँ. So there is issue regarding decimals. हाँ, there will be decimal का difference because मैंने बोला था अलग अलग logbook में थोड़ा जो mean differences है, there are values which are different. So if you just follow the Navneet wala log table ना, that is standard one. It will be better everyone uses Navneet log table. कोई और मत use करो. Get a Navneet logbook. That's standard and best to use. The purple colored one, right? Yes, purple colored. It's available in all the stationaries. Yeah, yes, I bought it yesterday. Like on the So exit. please follow that only. Everyone follow that only. ठीक है. अब log के लिए मैंने क्या बोला था? Just solve it with a proper format. Antilog of NR and DR. Whatever values in NR are there, you write the characteristic value. 394 का 2 point, 1 point, 3 point. Add them, you will get a net value over here. And subtracted with the dr 2 point and 3 point. अब quickly log से आप क्या करोगे? You will find out the log of 39 के अंडर 4, 18 का 0, 31 का 8 का 0, 62 का 2, 30 का 7 का 4. After finding all the values, you subtract the NR and DR and get a value for finding the antilog. तो जो भी आपका वैल्यू आएगा उसका एंटीलॉग ढूंढ लो and then you will get the final answer. हो गया. It is time consuming at the initial stage, but जितना आप उसको solve करोगे, practice करोगे, it will be easier. अच्छा, can we have the answer by calculator? Yes, anyone doing So it? it's 11.795. So 11 11 points.
Yeah, 11.8. Is it that small value? Yeah, sir. Oh, so I'm sure it's, yeah. 11.79. So you can write as 11.80 and then that's carbon. That's which one? So it could be carbon, right? Oh, Carbon cannot be directly used as a solute, ना? Individual metallic sorry. carbon, atomic Yeah. carbon नहीं ले पाओगे. तो एक्चुअली इतना लोअर मोलर मास का कोई सब्सटेंस एग्जिस्ट भी नहीं करता है. तो दिस डेटा इज नॉट एक्चुअली टू द स्केल, प्रॉपर नहीं है. एनीवेज सॉल्व करने के लिए तो हमने कर दिया, but normally the molar masses which you will get by solving this type of numericals is going to be higher only. I'm sure there is some problem with the data. Anyways, with respect to data, जो भी आंसर आ रहा है वो तो theoretical है, but practically we will have the molar mass which is much higher for the solutes. It's like 150, 180, 340 ऐसे कुछ molar masses आएंगे तो we can use the solutes like that. Fine. Yes, sir. Now one more on the same lines, the vapor pressure of pure benzene. Now the solvent is not water, it is which solvent? Benzene है. हेलो, प्योर बेंजीन मतलब इट इज द सॉल्वेंट. वाटर अब सॉल्वेंट नहीं है, बेंजीन है. तो मोलर मास 78 ग्राम पर मोल बेंजीन का है, तो दिस 78 इज M1. So M1. At a certain temperature is 640 mmHg. This is P1 not. P1 not. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी प्योर बेंजीन 640 है. अब a non volatile solute of mass 2.315 gram. What's this? So W2. 2 is added to 49 gram of benzene, that is, W1. and the vapor pressure of the solution is So 600 PS. mmHg. That's PS. तो lowering कितना हुआ? 40. Wait. पीछे this was delta P ना? Delta P मतलब we have to substitute the difference over here. Sorry. This was a blunder. This is delta P. Delta P matlab we have to substitute 31.8 minus 30.74, right? Everyone. Yeah, sir. तो 1.06 हुआ ना, तो यहाँ पर 31.8 और डिवाइड बाय 1.06. नाउ गेट द वैल्यू प्लीज. इसको मैं 1 पॉइंट ही रखता हूँ, इसको 0 पॉइंट. हाँ, अब बोलो वैल्यू. So it won't be 1.06 because we still be 106, right? मैंने 31.8 ले लिया ऊपर, Oh, जो okay. दिया है वही. So then it's like, so one sec. So 342.05. Exactly. That's what I was wondering. 342.05 and 342 जो है वो सुक्रोज का मोलर मास होता है. मतलब the solute to be used to achieve the required lowering can be used as sucrose. Sucrose is C12H22O11. इसका molar mass when calculated it is exactly 342. मतलब इस डेटा के थ्रू क्या समझा कि जो unknown solute है, I can use the sucrose as the solute to get this lowering. Understood? Yeah, sir. So how do we need to memorize the values of these compounds, the molar masses? See, there are few of the compounds जिसके molar masses अगर याद रहेंगे तो it will be better. जैसे यूरिया is 60,
Glucose is 180. Sucrose is 342. NaCl is 58.5. वैसे तो ऐड कर सकते हो 23 plus 35.5, right? Yeah, sir. Benzoic acid is 122. Acetic acid is 60. तो ये कुछ values है. If you remember, well and good. Over a period of time आप याद रख ही लोगे, तो अभी से थोड़ा याद रखना ट्राई करो. It will be better. Understood the numerical now? Yeah, Everyone? sir. So now once again, I will use the relative lowering of vapor pressure का molar mass वाला formula. अब अगर याद है तो tell me the formula. M2 equal to W2 by W1 W2 by W1 into M1 hmm. by delta P into P1 naught. Very good. अब simply substitute करो. That is W2 is 2.315 upon W1 is 49. Molar mass M1 is 78 by how much is the lowering? Delta P कितना है? अरे lowering कितना है बाबा? Difference ना? 40 mmHg का difference है. So यहाँ पर you will not substitute 640. It will be 40 only, and P1 naught will be your 640. तो एक zero गया. 4 into 16 times. So 58.96. Final answer? हाँ? Yeah, sir. 58.96. 96. So based on this value, can we select a solute for this experimental observation? So NaCl. NaCl. Yeah, that is what is the application of relative lowering of vapor pressure. Clear? Yeah, sir. Okay. So I'll stop here for today. We have started with the colligative properties and just discussed one of them. Next time बाकी 3 colligative properties है और वो बहुत simple है, तो at one shot I'll just discuss them. ठीक है? Yeah, sir.